Dear learner, welcome to my YouTube channel Upschooling. आपण माने पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन सेक्शन रे जो 15 मार्क आसे ता पर हम गत क्लास रे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तारि ऊपर हम MCQs डिस्कशन करथिले आ आज ए क्लास रे हम आउ केतोटी क्वेश्चन देखिबा असेसमेंट एंड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव सही हेड रे हम देखिबा प्लेस ऑफ इवैल्यूएशन इन द करिकुलम Scholastic and co-scholastic assessment, school-based CC, और जो charity assessment paradigm अच्छे, ये सब आपन को syllabus specific प्रथम question देखिबा. Evaluation should be continuous in order to, जेटा को review question बोली मु कहबी, और जदि आपन मान देखि नहांती पूर्व क्लास को, से CC क्लास टी के आपन जाय कि देखंतु, से तेरे भारी fundamentally जिनस गुड़ को बुझा जाइछि. आपण ताकू प्रथम देखंतु एवं देखिक एटा को देखले आपण को भलो बुझा पड़िबो. आ जदि आपण फर्स्ट टाइम देखुचंती अपस्कूलिंग को प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. रिवील द स्ट्रेंथ्स ऑफ लर्नर more frequently, reveal the weakness of learner more frequently, provide feedback to the teachers for modifying their teaching strategies, all of the above. या भीतर कोटी हबो जदि आपण पूर्व क्लास को देखिचंती निश्चय आपण उत्तर देबे ऑल ऑफ द अबव. खाली तार स्ट्रेंथ देखे ना स्ट्रेंथ वीकनेस आउ फीडबैक टू द टीचर्स फॉर मॉडिफाइंग देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज. एटा को हम इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस बोली कोन पय जानत. नंबर 2, a curriculum is what constitutes a total teaching learning program comprising. Curriculum ता कोन शॉर्ट रे कहि परिबे इट प्रोवाइड्स a framework of knowledge and capabilities seen as appropriate to a particular level. कोटे लेवल ताक हम करिकुलम बोली जानछन. अच्छा ताल कोन हबो एटा सब गुडा को आपण कहि परिबे A and B overall aims and syllabus, materials, methods and assessment. Both A and B हला आंसर. नंबर 3 रे देखिबा evaluation should be viewed as a component of curriculum with the twin purpose of कौन से दीटी purpose रही evaluation. Effective delivery and further improvement in the teaching learning process, framework of knowledge and capabilities, effectiveness of teaching material and methods, measuring the progress and achievement of the learner. या भीतर कोठी हबो framework of knowledge and capabilities जदि हमें देखिबा एटी हबो नाही. effectiveness of teaching materials and methods खाली से सही कामटी करे नाही. measuring the progress and achievement of learner खाली एतिकी मध्य करे नाही. कोन करे evaluation should be viewed as a component of curriculum. निश्चय effective delivery and further improvement in teaching learning process. तेणु एटी तार होची आंसर हबो. बुझा पड़ला एगुडा कि भीतर आंसर हबो किंतु यार भीतर सब रही जाइछ. क्वेश्चन नंबर 4, if evaluation is seen as an integral part built into the teaching learning process, learners will, गत क्लास रे हम आलोचना करथिले, learners will not perceive tests and examination with fear, lead to diagnosis, remedial action, lead to enhancement of learning, all of above. The integral process हला evaluation टी ताहाले पिला मानकर exam fear रहिबो नाही. इट्स a diagnosis and remedial action आपण नै परिबे. lead to enhancement of learning. तेने सब गुडा को होछि तार आंसर. नंबर 5 and 6 पय म आपण को गोटे किछि पॉइंट सेट देछि. in view of getting a complete picture of the child's learning, assessment should focus on learner's ability to पढंतु पढ़िले क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ए दिटे आपनकर हे परिबो. पिलार लर्निंग असेसमेंट ये कहां पर फोकस करिवो, लर्नर एबिलिटी कहां पर थिबो, learn and acquire desired skills related to different subject areas, acquire a level of achievement in different subject areas in the requisite measure, be aware of social and environmental issues, participate in social and environmental projects, retain what is learnt over a period of time. It's a complete picture of child's learning assessment. I am a learning and assessment section आज देखुचंती ये सब क्वेश्चन. एटा गोटे ओपन टेक्स्ट मु आपन को देली. आप ए क्वेश्चन गुडा को वेरी इम्प्लाइड ता भीतर खोजि करी आपन को बाहर करिया पय पड़े. एमती सीधा सीधा कोन जगह रे लेखा जाई नाही. अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 कोन को जे आपन पॉइंट्स गुडा को ठीक भाबर पढिया पय चाहउचंती आपन ताको रिवाइंड करी करी पढि परिबे. Assessment is a useful, desirable and enabling process where one should be careful
एठी नॉट टिके आपण खोजिबे या भितर चारोटी चॉइस रु तीनटी चॉइस ठीक अछि कोटी नुह assessment use a variety of ways to collect information about the learner's learning and progress in all subjects, collect information continuously and record the same, give importance to each learner's way of responding and learning and time it takes to do so, label learners as slow, poor, intelligent. ये चारोटी भितर कोटी नुह हुए तो ये तीनोटी सबु जाक ठीक किंतु एटी नुह दिस इज द आंसर आपण पिलांको स्लो पुअर इंटेलिजेंट ए भरी भाव लेबल करेंगे ना बिकॉज असेसमेंट इज ए यूजफुल डिजायरेबल एंड एन एनेबलिंग प्रोसेस ए बी सी है वन शुड बी एंड वन शुड बी केयरफुल नॉट टू डू नॉट टू लेबल लर्नर्स as slow poor intelligent नंबर 6 मध्य सही पॉइंट्स पर बेस करछि असेसमेंट नीड्स टू तला असेसमेंट कौन नीड करूछि रिपोर्ट ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस and be sensitive to every learner's response, provide feedback that will lead to positive action and help the learner to do better, make comparisons between learners both A and B. Assessment needs to report kariba on a continuous basis and it be sensitive to every learner's response. Eta nishchay assessment eya kare au kon kare provide feedback that will lead to positive action and help the learner to do better. A or B, A diti hela tara choice. Answer, both A and B. ये comparison करिबा नाही. Number 7. हमें diagnostic assessment, formative assessment आउ summative assessment ए सब जिनस मध्य आज देखिबा. Plus आगर मध्य आहुरी interesting questions सब रही very important questions. Evaluation रे कौन से paradigm सब रही assessment रे. Number 7, diagnostic evaluation take place. को जगह diagnostic evaluation हुए at the end of unit term test, the beginning of instruction, during the instructional process, both B and C. को जगह हुए diagnosis माने कौन पिलार होची learning difficulties रही छि आपण त खोजी करी बाहर करिवे. At the end of unit or term test एटा हबो कि yes एटा ही हबो. बिगिनिंग हम ना बिगिनिंग रे कौन होची आमे ताको प्लेसमेंट बोली कहउछंती प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रे आमे ताको कहउछंती फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहउछ 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कॉलास्टिक डोमेन ए बी सी डी भितरे प्राय समस्त ऑब्जेक्टिव रहिचंती गोटी ऑब्जेक्टिव नुह स्कॉलास्टिक डोमेन मु या पूर्व क्लास रे स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डोमेन आलोचना करथिले आज देखिबा desirable behavior related to the learner's knowledge, understanding, application, evaluation, analysis, and to apply it in an unfamiliar situation. To improve the teaching learning process, na C haba. Desirable behavior related to the learner's life skills, attitudes, interests, values, co-curricular activities, and physical health. Both A and B. को choice टी haba यार answer. Not the objective अपन not टी खोजी बाहर करो. Not टी हला A, C हला this is not. ये scholastic domain न कथा नुह किंतु A and B scholastic domain न कथा को scholastic domain न the desirable behavior related to learners life skill, attitudes, interests जोटा generic skill कथा हमें गत क्लास रे तापर आलोचना करथिले. 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा assessment that is carried out for taking decisions regarding appropriate modification in the transactional procedure and learning activities. Transactional procedure and learning activities रे अपन modification आनिबा पई जहा करंती से assessment टी के हमें कोन कहआ जाय formative, summative, diagnostic none of the above. अपन निश्चय कहबे formative assessment. Okay. Question number 10. Which of the following is not the feature of summative assessment? सेठी हमें formative assessment देखिले पूर्व क्वेश्चन ने it is summative assessment. Assessment of learning generally taken by students at the end of to demonstrate the sum of what they have or have not learned. The assessment methods are the most traditional way of evaluating student work. A feedback into the teaching and learning process. Yes. Which of the following is not a feature?
Summative assessment is the assessment of learning बोली आमे जानछथि तेणु एटी हबो generally taken by students some of what they have or have not learned वर्ष शेषरे होउची वार्षिक परीक्षा that is summative assessment आउ कोन होउची तो assessment methods are most traditional 3 घंटा भीतर परीक्षा रही जाउ पेन एंड पेपर रे होउची तेणु summative assessment रे तीनटा जाक केवल नुह एटी so this is the answer this is not the future a feedback into the teaching learning process feedback टाको आमे कहबा कोन formative assessment बोली कहि परिबा diagnostic in nature मध्ये हे परिबो से question number 11 which of the following is not a feature of empowering schooling school based CC रे traditional schooling enriching schooling empowering schooling या पर आमे कथा रखिबा दु तीनटी क्वेश्चन रे रखिबा because the focus has shifted from controlling प्रथमे कंट्रोलिंग रो स्कूलिंग आरंभ हेछि तापर एनरिचिंग स्कूलिंग हला एवं आजिका डेट रे हमें ताकू एम्पावरिंग स्कूलिंग बोली कहबा एक्सपीरियंस सेंटर्ड एम्पावरिंग स्कूलिंग एक्सपीरियंस सेंटर्ड निश्चय ये वर्चुअल ऑथेंटिसिटी रहिछ एम्पावरिंग स्कूलिंग ट्रेडिशनल स्कूलिंग रे एक्सपीरियंस सेंटर्ड जगह हमें टीचर सेंटर्ड देखत एवं एनरिचिंग स्कूलिंग रे हमें एक्सपीरियंस सेंटर्ड जगह रे स्टूडेंट सेंटर्ड देखत सेमती वर्चुअल ऑथेंटिसिटी जदि एम्पावरिंग स्कूलिंग रे गोटे फीचर हबो ताहला हमें से जगह रे देखिबा एनरिचिंग स्कूलिंग रे सेल्फ डायरेक्टेड हुए वर्चुअल ऑथेंटिसिटी जदि खोजा जाए ना एवं ट्रेडिशनल स्कूलिंग रे सब्जेक्ट एंड क्लासेस ये हला टीचर डायरेक्टेड रहे रिस्क टेकिंग इज ए कॉम्पिटेंसी हमें ताको देखंती कोठी एम्पावरिंग स्कूलिंग रे से जगह रे हमें एनरिचिंग स्कूलिंग रे क्रिटिकल थिंकिंग भलिया जिंस कॉम्पिटेंसी की बात एवं ट्रेडिशनल स्कूलिंग रे हमें मेमोरी बेस्ड देखंती जिंस तेणु ये तीनोटी जाक रहिला ए बी सी एगुडा का फीचर्स ऑफ एम्पावरिंग स्कूलिंग खाली एटी नुह स्टूडेंट सेंटर टी कार स्टूडेंट सेंटर टी एनरिचिंग स्कूलिंग रो एटी हला तार आंसर ए क्वेश्चन पाई 12 नंबर क्वेश्चन स्कूलिंग व्हिच फोकसेस ऑन रैंकिंग इंडिविजुअल्स sorting and ranking individuals and mostly teacher directed एबे मु आलोचना करथि जदि एभଳି एक स्कूलिंग देखिले जे माने फोकस करचंती sorting and ranking individuals instead of continuous assessment or multiliteracies जदि हमें enriching schooling देखिबा ए sorting जगह रे ranking जगह रे से माने कोन करथुले ना continuous assessment करथुले किंतु जेतेबेला हमें empowering schooling पाखु का आसीबा से माने कोन करछंती मल्टीलिटरेसीज करछंती सब कथा खोजुछंती ता भितर केवल गोटाए सब्जेक्ट को नै करी काम न ताले एटा को स्कूलिंग हबो रैंकिंग एंड मोस्टली टीचर डायरेक्टेड एटा हबो ट्रेडिशनल स्कूलिंग एनरिचिंग स्कूलिंग रे कोन रहउची रैंकिंग जगह रे कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन रहउची टीचर डायरेक्टेड जगह रे कोन रहउची सेल्फ डायरेक्टेड रहउची एटी रिपीट हो जाइए एटा एनरिचिंग नुह अपन ताको एम्पावरिंग स्कूलिंग करंतु रैंकिंग एंड शॉर्टिंग इंडिविजुअल्स जगह मल्टीलिटरेसी होची एठी कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन होची एवं मोस्टली टीचर डायरेक्टेड जगह एनरिचिंग रे सेल्फ डायरेक्टेड होची आ ए जगह वर्चुअल ऑथेंटिसिटी होची तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 कहूची द असेसमेंट पैराडाइम वेयर बाय द टीचर डिजाइन्स लर्निंग टीचर कलेक्ट्स एविडेंस एंड टीचर जजेस what has been learned and what has not been learned ए समस्त जिनस टीचर कर आम कौन कहबा आम कहबा असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कहबा जो जगह टीचर डोमिनेट कर देखा द प्रोसेस वेयर बाय समवन अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एंड क्वांटिफाई द नॉलेज एटीट्यूड्स एंड स्किल्स पोजेस्ड बाय अनदर जणे आउ जनकर असेसमेंट कर assessment for learning of learning as learning in learning कोठी हबो assessment of learning हबो एटा गोटे टीचर डोमिनेटेड बिकॉज the learner has little involvement in the design or implementation of the assessment process ए circumstances रे 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा assessment for learning पचारली is more akin to formative assessment for learning ता हमें कहबा formative assessment रो पाखा पाखी मीनिंग मु कहिदेली टिके इंडिकेट कर दे फॉर्मेटिव असेसमेंट तेने आपण खोजी न फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कोन रहउची एठी मध्ये से टीचर डिजाइन करूची एठी मध्ये टीचर असेसमेंट डिजाइन करूची स्टूडेंट मानकर फीडबैक सहित एठी टिके डिफरेंस आसला
ऑफ लर्निंग पाखर तापर टीचर जजेस व्हाट हैज बीन लर्नड टीचर मध्य कौन पढ़िछ कौन न पढ़िछ ए कथा मध्य देखुछ बट स्टूडेंट डेवलप्स इनसाइट इनटू व्हाट इज नॉट किंतु पिला माने कहि दउछन्ती सेठी पिला मानकर किछि रोल रहू नाही आमे देखुछन्ती ऑफ लर्निंग रे एठी किंतु रोल रहउछ स्टूडेंट डेवलप्स इनसाइट इनटू व्हाट हैज नॉट बीन टॉट or not been learned. Then all of the above are the answer. This is the answer. 16 number question देखिबा. The assessment as learning टा कोनटा देखंतु is perhaps more connected with the ताका में diagnostic assessment सहित टिके रिलेट करबा. For learning टा का में formative assessment सहित how as learning assessment as learning टा को diagnostic assessment सहित रिलेट करबा. It generates opportunities for self-assessment and peer assessment. Teacher and student co-construct learning. मिसिक्री करत. Assessment and learning progress map. ये दीटा जाक ना केही नुहंती. या भितर आपण चॉइस नेबे both B and C. This is the answer. एटी पिला मानकर रोल रहुछ. तार कारण हला students take an increased responsibility to generate quality information about their learning and that of others. It is a balance teacher and student roles and responsibilities towards assessment. 17 number it should be deeply embedded teaching and learning and be the source of interactive feedback, allowing students to adjust, rethink and relearn. Very important question. Both assessment for learning and assessment as learning. Both A and B. ये दीटा जगह से जिनसे होच स्टूडेंट्स मानकर रोल रोच किंतु असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे रोहु नाही. 18 नंबर क्वेश्चन देखिबा. द असेसमेंट पैराडाइम दैट प्लेसेस द क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन व्हिच स्टूडेंट मॉनिटर्स स्टूडेंट माने assesses reflects on learning initiates demonstration of learning to self and others खाली निज को न तांकर peer मानक सहित मध्य and teacher acts as coach and mentor. एठी टीचर रोल हला कोच एंड मेंटर. कोठी हबो आपण को बॉली पड़ला जहा सेठी हबो. यस असेसमेंट इन लर्निंग हबो. करेक्ट आंसर. से टू चेंज है कि फोकस टा कहार हबो ना 40 आंसर को क्वेश्चन टा अति गोटे उत्कृष्ट क्वेश्चन कथा उत्कृष्ट क्वेश्चन पाखर आसी के अटके. थ्रू एनक्वायरी स्टूडेंट्स एंगेज इन प्रोसेस that generates feedback about their learning, which come from multiple sources and activities, and it contributes to the construction of other learning activities, line of inquiry, and the generation of other questions. गोटे क्वेश्चन सब नोट बाहर करी विभिन्न कथा पिला सब आलोचना करे. क्वेश्चन टा रिलेट करे असेसमेंट इन लर्निंग रे. एटा हला तार आंसर. जतक क्वेश्चन आपण देखिले पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन सेक्शन या पर क्लास रे आमे टूल्स ऑफ असेसमेंट देखिबा. से पर्यंत एको आपण बारंबार देखंतु and please share it among your friends and comment what are your difficulties. Please subscribe if you are watching it for the first time, and if you have already subscribed, I value your support. Thank you very much.